Hello, shall I ask one question, Ah, sir? So after listening this class, it can be observed that present weather changes are due to this galactic changes or galactic superwaves. Also, these changes will become more serious in future, particularly in the year 2025 onwards. From this year And onwards. also, I observed today also that today I observed one thing, that some changes were there in the behavior of Arabian Sea over the Kerala coast. High Yes. waves, spring and tides, and withdrawal of sea for about 50 meters. Even also, so in a short future, like mass destructions of mammoth, dinosaurs, etc., human beings are also vanished. Isn't it so, sir? So that means at the time of our concept of this pralaya, total humankinds will be vanished. And according to your class, I came to know that human beings which are non-meditative human beings will be vanished forever. And the meditative human beings, which are very small in number, will be remaining. And your suggestions, please, sir. Yeah, I will answer it more precisely and in a stepwise manner, so that this kind of confusion may not occur in future. The changes, whatever is happening, it is inevitable. It will happen today, tomorrow, this year, next year. It is fixed. It is a fixed manner of stages of events. But while we are seeing the extinction event, I can revert back to that slide. See, do anyone find human is here? Human were there, but they were not extincted. सब जो डर फैलाते हैं, इनको दिखाकर डर फैलाते हैं. Whoever making the concept of pralaya by showing these kind of speechless animals, but it is very much peculiar to see human were there 30,000 years back, 15,000 years back, 18,000 years back, 12,000 years back. In every shift, in every galactic event happened on this planet Earth, human were there. And what we see ourselves as per Darwin's theory of evolution, Darwin says the evolution is only for who are ready to survive. It is completely wrong. It is very strange to see. I have an English session with another doctor. There we discussed how the human beings were there in past different shift. You might get surprised, all those human beings were quite developed than us in terms of physical height, in terms of brain capacity, in terms of consciousness, in terms of all the lifestyle qualities. So, what makes us behind to this point? For that, we need to understand the matrix. In matrix, there is a set of rules. We need to experience them.
Once you complete the experience, you need to cut off from those set of rules. Otherwise, these are all cyclic events. It happens. Like today, you got angry. If you are conscious enough, then you can give command to universe that this angriness is not for me. And the next moment, I want to evolve. I want to see my consciousness evolution. Then you see a pattern of changes within that the coming angriness, the moment of angriness will drastically lesser and lesser and lesser. This is how we can cut off from matrix. And coming to these pralaya-like events, there also we were there. Now also we will be there. So no need to worry about pralaya concept. And one more thing, that displacement might happen from here to there to here, due to physical restructuring of the earth. But here one more question were there from you, that only meditators will survive and non-meditators will vanish. No. The real fact is, in world, in earth, there are 2/3 people are just computer programs. They are not real human beings. They are called NPC, non-playable character. They make us busy to understand the matrix is very real. The feeling while we felt like lockdown kind of events. You see, there is no one on the road. That is the real world without NPCs. Only 1/3 of the population of entire world is real human being. And what we all going to see, the destruction of the humanity, you will see the destruction of NPCs. And whoever will be stable in terms of their consciousness, like they know this is not real, what I see. This is just a computer program. They are just dying. You are stable, even if you are a non-meditator. Why we meditate? To help ourselves, to help others, to help Mother Earth. That's it. Okay, thank you. Thank you very much, sir. Thank you, ji. Ramaji. नमस्ते गौरहरी जी और सभी को, आप सभी को, सुप्रिया जी, एनपीएमसी मलयालम, संतोष जी आप दिख रहे हैं, और बाकी सभी को भी थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, बहुत ही ज्यादा अच्छा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जो लास्ट सेशन हुआ था, निधि जी ने लिया था वो, एंड इतना पावरफुल सेशन था वो कि मैं कुछ शायद ब्लॉकेज थी, कुछ हीलिंग होने को बाकी रह गया था, एंड लिटरली मैं इतने सारे लोगों के सामने रोई, और जबकि मेरे मतलब कि पर्सनालिटी के बिल्कुल खिलाफ है, मैं कभी रोना नहीं चाहती,
और मैं कभी पब्लिकली रोई भी नहीं। इनके मैं कभी फैमिली मेंबर्स के सामने भी रोना पसंद नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मतलब मैंने अपने आप को ऐसे बनाया कि नो नो क्राइंग। तो वो जो जिस पर्पज से उस दिन मैंने बात की उनसे, वो कम्प्लीटली हील हो चुका है। हालांकि मैंने ये बात इनको गौरहरी और निधि जी को मैसेज में भी कही व्हाट्सएप पे, लेकिन सबके सामने बताना इसलिए जरूरी है कि कई बार लोग ज्वाइन करते हैं सेशन, अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, पूरा सुनते भी नहीं है बहुत बारी। लेकिन हर एक लाइन, हर एक वर्ड इतना पावरफुल होता है, और वो हर किसी के लिए होता है। हम इतने सारे ट्रॉमास लेके आ रहे हैं, इस लाइफ का ट्रॉमास एंड पास्ट लाइफ ट्रॉमास। मैं हैरान थी जिस समय मैं बता रही थी कि ऐसा लगता है कि सब सेटल डाउन हो गया है, सिर्फ एक चीज है जो मुझे ऐसे हर वक्त जैसे मेरे हृदय को ना चुभती रहती है। जब ये हुआ सेशन, एंड नॉर्मली ऐसे ही निधि जी शेयर कर रही थी इंफॉर्मेशन, और मैंने जब बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो दिन एंड दैट टाइम वो एनर्जी रिलीज हो गई। उसके बाद से मैं खुद हैरान हूँ कि मैं कितना नॉर्मल हो गई हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि इंसान अपने दिल को समझा लेता, नहीं, मैं एनर्जी को फील कर पाती हूँ हमेशा ही। मैंने अपने आप को नोटिस किया है, हील्ड, कंप्लीटली हील्ड। तो गौरहरी जी का भी एंड निधि जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। और जो आप सब लोग सुन रहे हैं, अगर तो कोई भी आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसे भारीपन या कोई ट्रॉमा किसी भी किस्म का आपको लगता है कि हमें ना एक्सपेंशन में या हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमें ना भटक रही है कोई चीज, आप एक बार वो सेशन जरूर सुनना। जो नीरज जी ने बताया था फीमेल एंड मेल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, बहुत ही पावरफुल है। और मैं सभी से जो अभी सुन रहे हैं उनसे रिकमेंड करूंगी कि वो सुने। ये बात मैं ना भी बताती तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी बात हो गई है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ये बात कि आप सबके लिए जो इस समय सुन रहे हैं, 39 पीपल हैं, अगर कोई है कुछ अटक अभी भी, आप प्लीज वो सुनिए। आप मुझे सुनेंगे उसमें रोते हुए। और मेरा जो वो खटक थी ना, क्या थी वो भी आप सुन पाएंगे। वो बहुत पावरफुल सेशन था। इतने प्यार से वो जब समझा रहे थे ना, तो बस मैंने अपनी बातें कही और मेरा रोना स्टार्ट। एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली हील्ड एंड मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, अपने लिए तैयार हूँ, धरती माता के लिए तैयार हूँ, और मैं अपने सभी भाई बहनों के लिए तैयार। Thank you, जी। Okay, come. Yeah, Namaskaram, sir. Thank you for that wonderful session. I usually follow your channel on YouTube, and I should say it's not regular, but I always, if I get a chance, I always listen to your YouTube sessions. I just wanted to ask you, being a Bharatiya, because you're so inclined and you're so much into the culture with a lot of belief in the higher self, will this help us through this transition? I just wanted to know that. Thank you so much, sir. Being a Bharatiya in terms of connecting with our Mool Swarup, that is higher self, is much more needed. But in case of Bharatiya, there is a lot of garbage which we called belief system, like savior, religion, methods, gurus, perfect method, perfect guru, perfect path of ascension, perfect tool for meditation. This is just an illusion. There is nothing called perfect.
There is nothing called higher. There is nothing called lower. What important is for which technique we say authentic. That technique we as individual should assimilate, feel that technique, not in terms of physical experiences. Like I am focusing here for 3 days and suddenly this started vibrating and I immediately go for another person, ask him, what is it? Then he says me, it's third eye. But strange to see, I will show you what is reality. You see the bigger black dot in the center of the brain, and below that, in an angle, there is a small black dot. That is third eye. If I get vibration here, may I claim that is third eye? So my point here is the technique, the knowledge which I can assimilate, and that assimilated energy, information, or the technique showing my path more clearly, that is perfect. And that itself is a perfect spiritual ascension. And without it, if I just get some physical experiences and foresaid thoughts, informations from people wearing orange clothes, white clothes, and we pamper them as guru, as angel, as some kind of higher masters. We need to understand if they are higher, they should vanish from this matrix. I am sitting here, he is also sitting here. So we both are equal. That equality is very important to create the oneness. And that state of oneness, even if it's lower level consciousness, right? Everyone in the matrix, that oneness will uplift their consciousness to join with planetary consciousness. That is unity consciousness. Then whatever source is sending to Mother Earth, we all are getting, because we as a one already connected to the planet Mother Earth. That's it. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Ji. Yes, sir. I would like to ask one question. I have some idea about it. Like it's about vaccines. Could you tell the people how harmful the vaccines are? And now children are made to have many vaccines. So could you give us some information about that? There was a session we did with Guinea Ji. In that, I researched in WHO website about 180 plus vaccines all over the world and how meaningful they are, means how effective they are on
ह्यूमन हेल्थ। जब वो सेशन के दौरान मैंने रिसर्च किया, 180 से ज्यादा वैक्सीन्स थे जो पूरे दुनिया भर में WHO ने रेकमेंड किया और स्वीकृति दिया कि वो पर्टिकुलर कंट्री में वो लगा सकते हैं। देन आई थॉट, देन आई सी ए वेरी स्ट्रेंज hierarchy, separation, again separation. What is that? The vaccine in Australia, it is not permittable in India, not in Singapore, but yes in Fiji, but no in Africa. मतलब जो वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया में लगाई जा रही है वो इंडिया वाले नहीं लगा सकते, अफ्रीका वाले नहीं लगा सकते, वो फिजी वाले लगा सकते हैं, लेकिन सिंगापुर वाले भी नहीं लगा सकते। बाकी देशों का तो नाम ही नहीं है। तब मन में क्वेश्चन आया कि क्या वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। फिर दूसरे वैक्सीन पे गया तो जो काफी फेमस है, बच्चों को लगाते हैं, BCG, उसका व्हाइट पेपर है। व्हाइट पेपर मतलब जब वैक्सीन को क्लिनिकल रिसर्च के माध्यम से पहले जानवर के ऊपर अप्लाई किया जाता है, फिर इंसानों के ऊपर अप्लाई किया जाता है, फिर फाइनली मार्केट में लाया जाता है। ये प्रोसेस को क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। तब स्ट्रेंज देखा कि BCG वैक्सीन का जो व्हाइट पेपर है, जिसमें उसकी सारे रिसर्च डेटा लिखी जाती है कि इस पे पॉजिटिव साइन है, मतलब काम कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है ऐसा। तो उसमें पिकुलियरली लिखा गया है कि BCG वैक्सीन हैज नो हेल्थ इम्पैक्ट, नो हेल्थ बेनिफिट ऑन ह्यूमन स्पीसीज। कब का है? 1990 का है। आज कितना हो गया? 2024। 34 साल हो गए, 34 इयर्स हो गए, फिर भी बच्चे लगा रहे। उससे पहले तो मैं भी मैं भी लगाया। तो ये है उसका ट्रूथ। तो कोई साथी जैसे कि आज या कल ग्रुप में पूछ रहे थे कि हेपेटाइटिस का उन्होंने कंपलसरी कर दिया, उनका बेटा या बेटी जो है मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, उसके बिना नो एंट्री है, उसके लिए कौन आवाज उठाए? दे ऑल नीड टू। जो लगवाने जा रहा है वो खुद आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि दैट इज द नेगेटिव स्टेप अगेंस्ट देयर फ्री विल। तो वो पेरेंट्स जो है वो मुझे मैसेज करके बोलते हैं, आप सिर्फ ना बोल कर कह दीजिए। सो इन लॉ एंड ऑर्डर आल्सो, इंडियन पिनल कोड, व्हाट इट सेज इन सुप्रीम कोर्ट, कि आप सोशल मीडिया में किसी भी डॉक्टर, लॉयर, पुलिस इंस्पेक्टर, उसका कहा हुआ बात को आप एज ए साक्षी या तो प्रूफ की तरह आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। तो हमको कायदे से काम करना चाहिए, एज पर दी लॉ। उसमें कौन पहले आता है? पेरेंट्स। पेरेंट्स सब मिलकर उस यूनिवर्सिटी, उस मेडिकल कॉलेज में रिटर्न एप्लीकेशन देना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं उनको आवाज उठानी चाहिए। देन ओनली दिस प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व। अदरवाइज आप WHO के वेबसाइट में जाइए, पर्टिकुलर वैक्सीन का व्हाइट पेपर है, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें लिखा हुआ होगा कि ये ह्यूमन के ऊपर कितना इफेक्टिव है।
उसको दिखाकर आप डायरेक्टली केस कर सकते So basically, आप most of the vaccines don't have any positive benefits on human yes beings. yes It's destructive. and most of the vaccines doesn't have the white paper also. If we visit to African countries, if we visit to South American countries, there is a disease very famous, that is yellow fever, and any person going to that continent must have yellow fever vaccine. आप WHO के वेबसाइट में जाइए, येलो फीवर वैक्सीन के ऊपर कोई व्हाइट पेपर नहीं है, बट ट्रू टू द फैक्ट दैट वहां पे जो ट्राइबल्स रहते हैं उनके पास कुछ ऐसे ट्री मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जिनको हम आयुर्वेद कहते हैं, जिसको यूज करके आप निर्वाणा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में भी पहुंच सकते हैं. The ones which you call psychedelics. साइकेडेलिक्स ayahuasca है, मैजिक मशरूम्स है, those are. So is that a catch between this vaccine and go there? So ये चीज हमको ही खोजना चाहिए, प्रूफ निकालिए और सरकार के सामने आवाज उठाइए. आशा बंधन ने ले आवाज आ रही है जी सर? जी जी. हाँ, आशा बंधन। गौरवी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, दो बातें, अभी वैक्सीन की जो बात चल रही थी, तो जो मेरे को 2 वैक्सीन लगी हुई है, जिसकी वजह से मुझे न्यूरो इश्यूज बहुत ज्यादा आ गए, जबकि मैंने मना किया था, फर्स्ट में ही मना किया था, बट वो इमोशनल ट्रॉमा करके जबरदस्ती लगवाई गई। तो क्या उसका क्या डिटॉक्सिफिकेशन है क्या? क्योंकि मेरे को ना इमेज रखी रहती है, बट आप ध्यान मैं कीजिए, रिलाई नहीं कर सकती। हाँ, रेगुलर, आप रेगुलर ध्यान ध्यान। कीजिए, हाँ और जिन्होंने हाँ। भी वैक्सीन्स को बिना जाने, बिना कॉन्शियस के डिसाइड करके वो वैक्सीन्स लिए हैं, वो वैक्सीन हम्म, आप सबके बॉडी में ऑलरेडी निरस्त करी जा चुकी है. वो आपका ओके सबकॉन्शियस पैटर्न में पड़ा है कि आपने लिया है करके, अदरवाइज वो आपके बॉडी में एग्जिस्ट ही नहीं करता. ओके। जी, आप जो और भी और रेगुलर सर, ध्यान करते हैं उसको किया कीजिए, और यूनिवर्स में इंटेंट डालिए कि इसके प्रति मेरे मन में जो भी भय है वो दूर हो रहा है, और मैं इन सभी सिम्टम से मुक्त हूँ. ये आप 1-2 हफ्ता प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए कि वो सिम्टम्स भी गायब हो जाएगा, आपके मन के अंदर से वो भय भी चला जाएगा. So, sir, like you're saying that if the person is ignorant about that or the effects of that, then it will not affect them. Yes, COVID has been neutralized totally. Thank you, sir. Thank you very much जी, for your valuable session. It was very useful. Or everything yes, was for so many people, it was new information. Thank you so much for your time and coming to our platform. Thank you so much. yeah, thank you. Thank you, sir. Namaste everyone. Thank you, sir.